अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बोटी फ्राई बनाएंगे। जी हाँ, पक्का विलेज स्टाइल में और एक ट्रेडिशनल वे में हम लोग आज बोटी फ्राई बना के दिखाएंगे। चलिए देखते हैं आसानी से नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। बाउल गर्म हो गया है, रेसिपी स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें ऑयल ऐड करेंगे।
ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। रॉ स्पाइसेस के साथ साथ हम लोग इसमें ड्राई रेड चिली ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा नरम होते ही हम लोग इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। इसी ऑनियंस में हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। बोटी फ्राई रेसिपी जब भी बनाते हैं मतलब स्पाइसीनेस ही अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ऑनियंस ग्रीन चिलीज ऑयल में अच्छी तरह फ्राई हो के बाद हम लोग इसमें पहले ही बॉईल करा हुआ बोटी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में बोटी ऑयल में अच्छी तरह फ्राई हो गए बाद हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर। इन सारे स्पाइसेस में बोटी अच्छी तरह फ्राई होते वक्त ही हम लोग इसमें ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला ऐड करेंगे। माशाअल्लाह रेसिपी परफेक्टली बन गया है। फाइनली इसको और भी मज़ेदार करने के लिए हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे। माशाअल्लाह बहुत ही मज़े का बना है और ऑल स्पाइसेस सफिशिएंट क्वांटिटी में है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी सेम प्रोसेस में अपने घर पे कोशिश करिए, इंशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बनेगा। मैं तो खा लूँगा और इमीडिएटली नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा।
ये वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलना। अपने घर पे भी बना के देखिए, आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।